Yes, sir. Okay, so yesterday we have seen that if I have given charge profile of depletion layer, okay, so this is my charge profile of depletion layer with with respect to x. Okay, so this is p region, this is n region. So here we have donor ions, and here we have acceptor ions. Okay, so we can, if charge density is given, okay, as a function of x, we can plot the electric field. So electric field, so say this position is minus xp, and this position is xn. Okay, so I can plot the electric field E, this one, this way. Okay, so this was my electric field profile, and here electric field is maximum. So we have done this yesterday, and we know we have calculated the expression for electric field and expression for electric field and maximum electric field. So we know in the p region, okay, in p region my electric field was E function of x minus q na upon epsilon s x plus xp. Okay, this is from p region minus xp2 0. Similarly, in n region, I have 0 from x is between 0 and xn, and the expression for electric field was q nd, okay, x minus xn, and the value of maximum electric field is at x is equal to 0. Okay, so this is at x is equal to 0, and this will give me minus q na es xp. Okay, and this is also equal to minus q nd es xn es xn. Okay, so this much we have done yesterday for the depletion width. Now I want to calculate what is the built-in potential in terms of electric field. Okay, so we know our E is minus dp upon dx. Okay, if I know if I want to calculate potential, so if I want to calculate VBI, okay, then I need to integrate electric field. Okay, from where? From minus xp to xn. So I didn't integrate this one minus xp to xn. Okay, so E dot dx. Okay, so e dx, sorry, integration E dx. So integration E dx nothing, it is simply the area of this curve. This is the area, this is the E versus x relation. Okay, if you can integrate, that means we calculate the area, then we can find what is the VBI. So we can directly do this one, because this is a triangle. Okay, and this is xp plus ns, this is this width is w. Okay, so this width is w, and this height is emax. Okay, so I can write my VBI directly, half em. Okay, magnitude of this is minus, I'm taking magnitude, area we need only magnitude, half em, okay, into w, the width. Okay, so if you want, you can also calculate, you can put the electric field values. Okay, and the same answer will come. For example, I am calculating, say, VBI. Okay, it will be minus, I'm from, because electric field is different in both region, so I am, okay, splitting this integration E dx, okay, plus minus 0 to xn E dx. Okay, now I know the electric field minus xp 0, E value is this one, p region. Okay, so I can write minus q na
es x plus xp, okay, minus 0 xn, okay, and n region the electric field is qnd es x minus xn, okay. Now integrate this one, okay, integrate this expression, and also we know from charge neutrality the relation na xp, okay, equal to nd xn. Excel. This expression you have to use and integrate this expression, okay. So if I integrate this one, this minus minus become plus, this become q na es, okay. Inside this x plus xp, if I integrate this one, this will become x square by 2 plus x xp, okay, limit minus xp 0, okay. And similarly if I calculate this one, this become minus q and d es, okay, this become x square by 2 minus x xn 0 to limit is 0 to 0 xn, okay. Now try to solve this one. So if you solve this one, okay, then okay, I'm doing it here. So if I solve this one, this will give me q na, okay, epsilon s, okay. If you put the limit 0 0, okay, now minus xp, so if you put the limit, okay, then if you put the limit, what will come? कुछ मिस्टेक होएगा यहाँ पर. This is q plus, okay, qna, okay. If you put the limit minus, this should come minus, okay, minus, okay, minus xp square by 2, okay, and I put minus again minus this x is equal to minus xp, तो minus minus plus हो जाएगा, तो this become plus xp square, okay. And then similarly if I do here, this will give me minus q and d, सर पहला xp स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना, x स्क्वायर के यहाँ हम माइनस xp सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो वो लिमिट लगा, लिमिट ले रहे हैं ना, करेक्ट. then minus q and d, okay, es if you put here, so if you put xn square, this will give you xn square by 2 minus xn square, if you put the 0, this will become 0, okay. So this will give me q na es, okay, and this will give me xp square by 2 here minus half q square, so minus minus plus, so half q and d es, okay, xn square by 2. Now you can use this equation, charge neutrality condition, and you can simplify this expression, okay. So I'm removing this one, okay. So if I now solve this one, this will give me now q 2 es by 2 q by 2 es, I can take common, this will become na xp square, okay, and nd xn square. So now you can solve it, q2 es, okay. So I am removing this xn here, nd xn here, so instead of nd xn I can write na xp, so this become na xp square na xp xn, so this will give me q upon 2 epsilon s, okay, na xp is common,
Okay, NXP is common, and this become XP plus XN. Okay, so this Q, okay, half Q NA XP ES, and this is W, and this is nothing. This is the maximum electric field value. This half E max W. Okay, so if you know directly, if you can calculate the area directly, you can know area, you can write directly. Otherwise you can put these values, okay, and you can find the VBI. Okay, so now we have formula for VBI. VBI is equal to half, okay, magnitude of maximum electric field into deflection width. Okay, so now I want to find W. Okay, W in terms of VBI. Okay, and this EM I know, QNA XP upon ES. Okay, so how can I do it? This one. So I have now VBI. Okay, half, because deflection width varies when we change the between potential. If we modify, okay, EM. So EM is already we've done here. This is QNA XP ES W. Okay, now I know this half. Okay, I know relation between X and XP. Okay, so my XN plus XP is W. Okay, so and I also know that NA XP equal to ND XN. Okay, so here I can get the value of XP in terms of W. So from here I can write my XN. My XN is equal to NA XP upon ND, and this value I can put here. This will give me NA, okay, XP ND plus XP equal to W, and XP will be now 1 plus NA upon ND W. Okay, so XP will equal to ND W NA plus ND. ओके, तो ये हमको पता ही है कि जो XP होता है वो ND के प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स द width in P side is proportional to increases when we increase the doping of other side. अगर N में डोपिंग करोगे तो P के साथ XP बढ़ेगा. ओके, और अगर P के साथ में डोपिंग बढ़ाओगे तो XN बढ़ेगा. तो this is reverse. Okay, so XP ND, you increase ND, dopant in the N region, you increase the XP. Okay, this relation correct. Now you can put this XP value here. Okay, you put this XP value here, so you'll get VBI. VBI is equal to half Q NA ES. XP value is ND. Okay, upon NA plus ND, and this become W square. Okay, so from here I can write my W is equal to 2 VBI. Okay, ES Q. W स्क्वायर कैसे हो रहा है? W एक ये W यहाँ से आया ना? ये सर, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. So this become 2 VBI ES. Okay, Q. Okay, और ये पूरा नीचे आ जाएगा NA ND NA प्लस ND. ओके, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. नाउ आई नो दिस NA ND NA plus ND. Okay, this is equal to 1 by NA plus 1 by ND. Okay, and this is equal to 1 by N effective. So I can write my W is equal to 2 ES VBI. Okay, Q N effective. Okay,
So this is the formula for depletion width, okay, at zero bias. Okay, PN junction at zero bias. Okay, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, आज लोग कम के 10 ही लोग आए हैं आज, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? कंचन क्लियर है? हाँ सर। Okay. So now this is an effective. Okay. Now if I increase a doping in one side, okay, say my Na doping is greater than Nd. Okay. So if Na is greater than Nd, so N effective, what is the value of any N effective? So N effective will be simply Nd. Okay. If one Na is greater than Nd, then 1 upon Na is less than 1 upon Nd. Okay, so this can be negligible, this term. So 1 upon N effective equal to 1 by Nd, so Nd equal to N effective. So for this case, okay, this is called one sided abrupt junction. Okay, अगर एक साइड की डोपिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो उस साइड की डिप्लेशन भी एकदम कम हो जाएगी. Okay, so this become one sided abrupt junction. So in that case the formula will become 2 ES VBI, okay, Q and D. Okay, so this is in the case of one sided abrupt junction. Okay, so this is the formula for depletion width. Okay, now this is the case when we are not applied any bias. This is the zero bias condition. Okay, now we'll see now this one for what happens when we apply bias to the PN junction. Okay, shall we move ahead? इसको मिटा दूं मैं? यस सर। यस सर। Okay. Now put the heading PN junction under bias. PN junction under bias. Okay. So पहले तो हमने देखा कि PN junction under no bias. Okay. I have PN junction. Okay. Simply this P and this the N, and we have not applied any voltage. Okay. So this is no bias case. Okay. And we have seen the energy band diagram. Okay. So this energy band diagram, this is EC, this is EV. Okay, this is EC, this is EV, and Fermi level is here. Now this is zero bias, no bias or zero bias. Okay. Now if you are applying forward bias, okay, what do you mean by forward bias? You apply N. If you apply, connect P with the positive of the battery and N with the negative of the battery. Okay, this is called forward bias. Okay, so forward bias में क्या होगा? डिप्लेशन विड्थ कम होगी। डिप्लेशन विड्थ कम होगी. क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर रहे होगे ना. Okay, so when you are applying no bias, okay, here I have a depletion width, where here I have plus charges, here are minus charges. Okay, so we have electric field in this direction. Okay, ये तो clear है ना? We have electric field. Okay, built-in potential. Okay, built-in potential, and we have electric field in this direction. Okay, now I am applying like extra V. Okay, so here we have E. Okay, now I am applying external voltage. This will produce E external. Okay,
Now because of this E, okay, the this E will modify, okay, this E will reduce. What is the formula for E? We know EM, okay, EM is 2 VBI upon W. ये formula है 2 VBI. Yes, sir. Okay, यही okay, 2 VBI equal to half W. Okay, so now what will happen when I am increasing we are applying voltage, okay, this will change the electric field here, okay, and this will reduce the magnetic field strength by V. What I voltage applying, say I am applying V, this V forward, or we say V, okay. So this will decrease in the case of forward bias. This Emax will decrease, okay, and this will reduce my width, okay. So now I can plot the graph, okay. This is my P junction with no bias. So now if applying voltage, what will happen? This VBI will decrease, okay. So this is my EC, EV, okay. So here I have QVBI, built-in potential is VBI, okay. Now the built-in potential will become now Q VBI minus V, okay, where V is the applied potential. It can be positive, negative. If it is positive, then it is forward bias, okay. So now this width will decrease, okay. Now similarly, if I apply this reverse bias, okay. So reverse bias means this is my P and this is my N. So I apply negative here, positive here. This is my reverse bias, okay, and I'm again applying voltage V, okay. So in this case, what will happen now? सर दिस विड्थ मींस जो इसी से लेकर क्यू वीबीआई माइनस वी का जो डिस्टेंस है वही है ना? क्या चीज? ये वाला? दिस ये यस सर, ये वाला डिस्टेंस ये बैरियर पोटेंशियल है ना, ये विड्थ तो ये है। ओके सर, ओके, ये बैरियर पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल जो बताया था ना फर्मी लेवल्स के बीच, जो फर्मी लेवल शिफ्ट हुआ था, ओके, फर्मी लेवल और वैक्यूम से जो हमने किया था शिफ्ट, ओके, दैट इज दिस वन, ओके। नाउ if you apply this one reverse bias, in that case what will happen? Your this potential barrier, okay, this will increase, okay, and now when I applying voltage, अभी क्या है bias में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है। now when I applying bias, that means I am separating now Fermi levels, okay। जब मैं वोल्टेज लगा रहा हूं, अब क्या पे क्या है, जब मैंने अप्लाइंग वोल्टेज, सो मेरा n का जो फर्मी लेवल है इट इज हियर, इट्स कॉल्ड EFN, क्वासी फर्मी लेवल ऑफ n टाइप, एंड p टाइप का फर्मी लेवल यहां पर है, ओके। सो p टाइप का फर्मी लेवल बोलते हैं EFP, ओके। सो दिस डिफरेंस q, व्हाट आई एम अप्लाइंग वोल्टेज QV, okay। so this gap is actually QV, okay। the distance whatever voltage I am applying, okay, that will now creating shift between the electric fields, quasi between the Fermi levels, okay। so this is the Fermi level of n type, quasi Fermi level of n type, and this is the quasi Fermi level of f type and p type, okay। so whenever there is a shift in Fermi level, then only you can flow the current, otherwise you cannot flow current, okay। in order to flow the current also, you have to create a gap between the Fermi levels, okay। so when I apply voltage, this will create a gap between the Fermi level and current will flow, okay। similarly here, now I am applying reverse voltage, this is my EFP here, okay, and this is my E here, EFN, 1 minute, and this gap is now your QVR, V reverse what you are applying, yes, this Q forward। हाँ, क्या क्वेश्चन है? Any question? Sir, by mistake, mic okay. on हो गया, sorry। So this is your reverse bias. So this is your reverse bias case. Okay. Now if I write the formula for depletion width, okay.
So depletion width formula is, what is the formula? Depletion width formula is 2 ES VBI minus V, okay, upon Q and effective. Okay, this is the formula for depletion width. Okay, now if you're applying forward bias, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं. यस सर. सर ये फॉरवर्ड बायस के लिए ही तो है ना, VBI माइनस अभी बता रहा हूं मैं. So now where, so W, okay, 2 ES VBI minus V, okay, Q and effective, okay, where V, your V is applied voltage, okay. So if it is a forward bias, then you can write V equal to VF, okay, in the case of forward bias. It is a reverse bias, then my V equal to minus VR, okay, in reverse bias. Okay, so you can put the V value here. Okay, if forward bias it will be VF, for reverse bias it will be, so this is first in no bias. Okay, this is no bias. This is no bias. Okay, now if you want to write for forward bias, W will be your 2 ES VBI minus VF upon Q and effective for forward bias. Okay, similarly for reverse bias, my W will be 2 ES VBI plus VR Q and effective. Okay, तो यही फॉर्म में याद रखो, VBI minus V, then you can put forward bias positive B and then you can reduce, you can put negative V. Okay, so formula ज़्यादा आसान है, VBI minus V. Okay, always decrease, positive तो positive, negative है तो plus हो जाएगा. So these are for depletion width formula for, okay, reverse bias. So this was PN junction. Okay, this was abrupt PN junction. Okay, abrupt PN junction. Okay, now we are going to see what happen when the charge density varies linearly. Okay? सर हाँ, ये नो बायस में 2 ES के बाद क्या लिखा है? VBI. VBI. ओके सर. Now put the heading. Okay, linearly graded PN junction. Okay, linearly graded, okay, PN junction. So now you are given the charge density. Okay, you are given the concentration. Okay, ND minus Na varies as a function of x. Okay, that is, now you have charge density. So this is the concentration varies as a function of x. So charge density will be Q into x. Okay, Q into ND minus Na, that is equal to QAX. Okay, that is given like this. So y equal to x. So this is now your charge profile. Okay, ND minus Na, okay, Q or rho. Okay, this is your charge profile now. So it varies as a x. So here I have W by 2. Okay, and this is minus W by 2. Now I'm taking symmetric. Okay, I'm taking symmetric this densities. Okay, that is here. If you come here, ND minus Na is positive here in this one. Okay, that means this is a plus. This is a plus as in T. This is an N region. Okay, if you go there here, ND minus Na minus x negative. Okay, that means Na is higher. So this is the negative here. So this is your P region, and both are in same order. Okay, so in P region here,
So in the here, this is a depletion region. Okay, this is charge profile, charge density variation in the depletion region. Okay, here we have P region, and here we have N region, and here this is the NA and ND. Okay, so if they are equal, NA and ND are equal. Okay, then this PN junction will be symmetric. Okay, now calculate electric field. Calculate electric field for this charge profile. Okay, apply Poisson equation, and again what we done yesterday, calculate the electric field. Okay, so what is Poisson equation? So Poisson equation, L equals to rho by 7. d upon dx equal to rho upon epsilon s. Okay, so now rho is given as a qax. Okay, qax by epsilon s. So if I integrate this one, de, okay, this will give me qax upon es dx. So ex is equal to qax upon es plus constant c. Okay, now x square by 2 ना, huh? x square by 2 होगा ना. हाँ, x square by 2 सही है, x square by 2. Okay, x square by 2. Now if you apply boundary condition, here n region, here p region, here electric field is 0. So at w by 2 or minus w by 2 is 0. So if you put x equal to w by 2 or minus w by 2, this is 0. Okay, then you get c equal to minus qa w square by. सर हाँ, सर ये x एक्सिस पे w/2 माइनस w/2 कैसा आ गया सर? ये सिमेट्रिक बीन जंक्शन है ना, मैंने ये तो बोला कि यहाँ पर डोपिंग सेम है, NAND डोपिंग सेम है. ओके सर. तो डिप्लेशन बराबर है. अगर एक में जाता है तो फिर एक से कम होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, ये दिस इज माय XP माइनस XP प्लस XN. ये तो नो बायस्ड वाले पे होगा तब, मतलब सिमेट्री दोनों टाइम. ये आपका माइनस XP है, ये आपका XN है. तो XP प्लस N का डिस्टेंस W होता है ना, तो मैंने इसको W बाय W माइनस 2 कर दिया है. ओके, सिमेट्रिक इसलिए ये नो बायस्ड वाला कंडीशन है सर कि ये अभी नो बायस वाला कंडीशन है. खाली हमको चार्ज प्रोफाइल दे रखा है. ओके, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ओके सर. हाँ सर. हाँ सर आपने c का वैल्यू कैसे निकाला सर? c का वैल्यू यू पुट x इज इक्वल टू 0. ओके, हियर w by 2 पे. ओके, ओके, ex x is equal to 0. Okay, 0 at x is equal to plus minus w by 2. Ex is equal to 0 at x plus equal to plus minus w by 2. Okay, so now my ex will be qa, okay, 2 es x square, okay, माइनस क्या आएगा w माइनस w स्क्वायर. w by 2 है ना, यहाँ w by 2 रखूंगा ना मैं. यस सर, w स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. तो w by 2 का होल स्क्वायर ना. तो यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस w by 2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज माय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ प्लॉट दिस ग्राफ. इसको कैसे प्लॉट करेंगे? ये किसका ग्राफ है? पैराबोला है. वेरी गुड. ओके, सो मैं आई एम रबिंग दिस वन. नो सर, वेट सर, फर्स्ट दो कर दो सर. सी का वैल्यू कैसे निकाला सर? सी का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट x इज इक्वल टू w by 2. तो यहाँ पे x w by 2 रख दिया. ओके, ओके सर. ex इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस w by 2. ओके, तो उससे c का वैल्यू आ जाएगा. c का वैल्यू क्या आया? माइनस qa 2es w by 2 का होल स्क्वायर. ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर इसी एग्जाम में आया है
किसी कंपटीशन में गेट या उसमें किसी में आया एग्जाम जैम में आया था। मिटा दो जैम सर। में आया, हाँ ठीक है। Yes, sir. सो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज सो एट x इक्वल w/2 इट्स बिकम 0, ओके। तो यहाँ पर ये 0 है x माइनस w2 पे, और यहाँ पे भी 0 है, ओके। और एंड बिटवीन इफ यू पुट x इक्वल टू 0, ओके, समवेयर इट इज मैक्सिमम। सो दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस, ओके। दिस इज द मैक्सिमम। सो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, em कहाँ पे होगा, x इक्वल टू w 0 पे। पे। So that will become minus QA 2ES W/2 का whole square. Okay. So that is my maximum electric field value. Or you can write EM is equal to minus QA, okay, 8 ES W square. Okay. Minus QA W square 80. Yes, okay. So this is minus W/2, this plus W/2. This is your electric field as a function of x. This is the x, and this is my EM. सर Okay. कैसे पता चला x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? भी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, हम्म, ओके। तो यहाँ पे यहीं पे मैक्सिमम होगा, और कहाँ मैक्सिमम होगा, पैराबोला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है, yes ओके। sir. Or you can differentiate, you can find condition of maxima, okay, then you find Oh. x equals 0, Right. okay. Now I know this function ex, okay. I want VBI. तो VBI कैसे निकालते हैं, how to calculate VBI? E equals to minus dv by dx होता है तो। हाँ, तो वही फंक्शन, Yes sir. इसका इंटीग्रेशन, अगर इसका एरिया पता है, पैराबोला का एरिया पता है, ठीक है, इस टाइप के पैराबोला का एरिया होता है 2/3 AB होता है, ओके। इफ दिस इज A, दिस B, ओके, तो इसका जो एरिया होता है वो 2/3 AB होता है। याद नहीं है तो तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट तो तुमको पता ही है। सो माइनस W/2 टू W/2, इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस, ओके, W/2 टू प्लस W/2, ओके। फंक्शन x की वैल्यू पता ही है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता ही है, ओके। Q A 2ES x स्क्वायर माइनस W/2 का होल स्क्वायर dx। कर दो, उसको इंटीग्रेशन कर दो, so this will become minus, let me change the markers. So this VBI, okay, this become minus, okay, your QA upon 2ES, QA 2ES, okay, and then I have this one. If I integrate this one x square, so this become x cube minus 3, okay, and I get this omega square 4x. The limit is omega/2 to minus Minus omega. omega by 2. Okay, so this minus QA 2ES, okay. इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ माइनस था क्या, ई में यहाँ माइनस था क्या? हाँ नो सर, No, sir. लेकिन सर वो मैनेज हो जाएगा, वो नेगेटिव हाँ, नहीं आ रहा। ठीक है, तो now W/2, okay, so this become WQ 24, okay, and this become WQ, okay, x 8, okay,
WQ into 8, sorry 4, कितना आएगा ये? सर ये W³/12 आ जाएगा एक्चुअली। 12 कैसे आएगा? It, Oh, हाँ यहाँ पे W क्या हुआ है? 8 आएगा ना? 8 yes sir. 8 आएगा, ठीक है। Then you put minus, okay, W/2, okay, then again WQ 8 24, okay, minus, you put minus W/2 here, so minus minus plus WQ 8, okay, this will give me minus QA 2ES, okay, so this WQ 24 22, this WQ 12, okay, and this minus, and this also minus, so WQ 4, so this will give me minus this minus QA 2ES, okay, into minus में आएगा ना अभी, कितना आएगा? -8/12 12, then omega Q, okay, omega Q minus 3 omega Q, okay, so this becomes 6, okay, so this become now QA omega Q upon 12 ES, okay, और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2/3 AB लगा दो, तो 2/3, okay, suppose A is my W and B is my maximum electric field, okay, maximum electric field की वैल्यू कितना था? QA 2ES and omega/2 का स्क्वायर, omega स्क्वायर by 4, तो ये तो हो गया ओमेगा Q और ये हो गया 12, सही है, ओके, सो QA omega Q 12 ES. So this is the built-in potential in this linearly graded linearly graded charge distribution depletion layer, okay, where the charge is linearly varying, okay, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर वो 2/3 और एक कर दो 2/3 AB, 2/3 AB, so ये B है, ओके, सो 2/3, ओके, ये W हो गया और ये क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, तो ये सेम आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे है ना, सेम ही आएगा। 2/3 AB का मतलब ये समझ नहीं आया सर। भी ये एरिया है इसका, अभी तो हमने ये क्या E.ds क्या होता है? E.ds एरिया, तो ये एरिया तो होता है, यस सर। ओके, तो अभी हमने सॉल्व करके निकाला, ये आया, ये आता है, ओके, अगर तुमको डायरेक्टली एरिया पता हो, अगर तुमको इस तरह का पैराबोला दे रखा है जिसका ये A है और ये B है, इसका एरिया 2/3 AB होता है, ओके, ओके सर, ओके। So remember this value, okay, VBI. Now one more thing here, okay, this is now I'm writing this value here, okay, this VBI equal to Q A WQ upon 12 ES, okay. Now I know, you know what is the definition of VBI when we have calculated VBI in the case of PN junction. What was the how we have calculated, okay, when I did the first derivation of VBI, तो हमने क्या किया था? VBI is what? Difference of Fermi levels, difference of Fermi levels, यस सर। ओके, तो यहाँ पर तो हमको ये चार्ज, हमको तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल दे रखा था, ओके, व्हाट वी गिवन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, ओके, बट वी आर नॉट गिवन व्हाट इज द चार्जेस हियर, okay, so how to calculate? Then if I want to use that Fermi level definition, okay, then how can I calculate the what is the VBI, okay, so if I want VBI, okay, that is what? EFN, Q VBI is equal to EFN minus EFP, okay. Now what is EFN here? So if I write EFN here, that is what? EI plus KT ln, okay. Now what is the charge here? Charge कितना है? So we have given charge density profile is as QND minus NA equal to what? QAX,
ओके, सो जो यहाँ पर बॉर्डर पे जो चार्ज डेंसिटी होगी, ओके, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, तो इस पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पोजीशन पे क्या या फर्मी लेवल है, दोनों का डिफरेंस ही इक्वल टू वीबीआई होगा। क्लियर पॉइंट? बी इसके आगे एन रीजन है, इसके आगे पी रीजन, यहाँ पी रीजन है, यस सर। यहाँ पे एन रीजन है। ओके, तो हमको यहाँ पर पता नहीं है कि इनका एग्जैक्टली क्या चीज है, तो हम क्या करते हैं, जो बॉर्डर पे है, जो कॉर्नर पे है, जो बाउंड्री पे है, वही चार्ज डेंसिटी ले लेंगे। बाउंड्री पे जो बाउंड्री पे चार्ज डेंसिटी है वही इधर होगी, फिर आगे तो वैसे कुछ हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं आगे, तो जो बाउंड्री पे चार्ज डेंसिटी है वही हम एनडी ले लेंगे। ओके, तो बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, क्यू ए डब्ल्यू बाई टू। ओके, सो आई कैन राइट instead of here and instead of nd I can write q a w by 2, okay, ni square, okay, let me check ऐसा ही होगा क्या होगा। सर एक मिनट just give me 1 second। aw by 2, aw by, ओके, हाँ हमको चाहिए चार्ज नहीं चाहिए, हमको चाहिए कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, एनडी बाय एन स्क्वायर होता है, एनडी बाय एन स्क्वायर। ओके, तो हमको खाली एक्स चाहिए, इफेक्टिव डेंसिटी चाहिए हमको। हाँ बोलो। हाँ सर यही पूछा था। हाँ, तो हमको खाली एनडी माइनस एन चाहिए, हमको चाहिए ए डब्ल्यू बाई टू चाहिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एन ए जीरो हो जाएगा। ओके, तो एन डी इक्वल टू ए एक्स, दैट इज ए डब्ल्यू बाई टू। ओके, सिमिलरली ये पॉइंट क्लियर है भी, जब हमको दोनों चीजें मिक्स होती हैं, वैसे मैंने बताया था कि एन डी माइनस एन ए है, ओके, तो इनका डिफरेंस ही लेंगे हम लोग हमेशा ही, दैट इज ए एक्स, एंड एट द बाउंड्री इट इज एक्स इज डब्ल्यू बाई टू, so the nd minus af is w by 2. Okay, so I'm writing here a w by 2. Similarly, if this is for n, okay, similarly if I want to write efp, that will be also ei minus kt ln same, okay, a w by 2 ni square, here minus w by 2, okay, minus by w by 2 क्या है, nd minus na, ओके, क्या हो गया, माइनस ए बाई टू हो गया, हमको चाहिए एन ए माइनस एन डी, माइनस तो इसका तो एन ए ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, एन ए हो जाएगी, दैट इज ए डब्ल्यू बाई टू। अगेन क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर। ओके, नॉट कैलकुलेट द डिफरेंस एंड कैलकुलेट द वीबीआई, सो दिस डिफरेंस, ओके, क्यू VBI, okay, so if a difference, this will cancel, okay, and this both will add, so KT ln AW by 2 upon NI square, okay, plus KT ln, okay, AW by 2 का NI square, okay, so this become 2 KT by Q ln AW 2 NI, सेकंड टर्म में KT होगा ना सर? KT NI स्क्वायर, ऐसा NI होगा, NI here NI, not NI square, ND upon NI, ND upon NI, okay, so this become, हाँ NI स्क्वायर होगा ना सर, KT होगा ना? क्या हो गया सर ND upon NI, ND upon NI, ND upon NI होता है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, NI स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस वन नाउ, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बाई टू, ए बाई टू है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले, ओके, तो के टी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर को बाहर कर दिया तो 2ni, ओके, अब सही है। सर ni तो कांस्टेंट होगा सर इसमें, या देखो वापस देखो इसको, यहाँ पे है अपना के टी है, ओके, के टी मैंने के टी कॉमन ले लिया मैंने, तो लॉन ए बी हो गया, तो ये क्या हो गया, ए डब्ल्यू बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, नीचे एन आई स्क्वायर हो गया, ओके, दैट मींस इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ओके, अब मैंने स्क्वायर को आगे भेज दिया, ओके, सो दिस बिकम 2 के टी, ओके,
this is Q, this is VBI, and this is ln, okay, Q W to NI. Let me check the answer. हाँ बोलो. सर इसमें ni जो है कांस्टेंट होगा ना सर? NI गिवन होगा. हाँ नहीं मतलब कि कांस्टेंट है ना सर यहाँ पे Q W हाँ, और अब ni. NI तो कांस्टेंट होगा. जो अगर सेमीकंडक्टर जो भी है सिलिकॉन का बना है या जर्मेनियम का बना है वो तो दे रखा होगा. ये VBI टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ना सर बस? कौन NI? VBI सर VBI. हाँ यहाँ से दिख ही रहा ना टेम्परेचर डिपेंडेंट है. यस सर. वहाँ पे सर ni पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? वो देखना पड़ेगा. वो अभी एग्जैक्टली ग्राफ कैसा आएगा VBI का वो देखना पड़ेगा क्योंकि NI खुद भी ni तो टेम्परेचर डिपेंडेंट पहले से ही है सर. NI भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ठीक है. और यहाँ से ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अब कौन सा फैक्टर जहाँ डोमिनेट करेगा VBI पे, ओके, वो तो देखना पड़ेगा. ठीक है. अब इतना कॉम्प्लीट क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये इटसेल्फ ही सिलेबस में होता नहीं है. थोड़ा सा पी इंजेक्शन करके रखा है, थोड़ा सा उससे आगे दे दिया है. ठीक है. अभी आप देखो दो तरह से VBI. सर आपकी आवाज नाउ अगर हमको इसको सॉल्व करें, हमको डिप्लेशन विड्थ निकालनी है, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, Q A W Q 12 ES इक्वल टू 2 KT बाय Q ln A W 2 NI. ओके. तो हमको ये जो इक्वेशन है वो न्यूमेरिकली सॉल्व करनी पड़ेगी. इस केस में हम लोग डायरेक्टली एनालिटिकली सॉल्व करके विड्थ का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते. जैसे हमने निकाला था ना पी जंक्शन में एब्रेट में, वैसे यहाँ पर विड्थ का फॉर्मूला निकलेगा नहीं. इस इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन फाइंड व्हाट इज द दिस डिप्लेशन विड्थ. ओके. और क्वेश्चन लेंगे जहाँ पर सिंपलीफाई कर सकते हैं. आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ओके, ऑन वेयर वी कैन एग्जैक्टली सॉल्व. ओके. सो यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटा दूं मैं? मेरी आवाज जा रही है सर. हेलो. इट इज क्लियर? आवाज नहीं आ रही मेरे पास. हेलो. यस सर. टेबल. हेलो. सर. हेलो. हाँ ओके. हाँ सर ये पूछ रहा था, ये सर ये सिलेबस में ही है ना सर? भाई एग्जाम में तो है भी. Yes, खाली sir. भाई आपको अगर चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आना चाहिए. ये इसको EMT क्वेश्चन मान लो अगर सेमीकंडक्टर का नहीं मानना तो. ठीक है. कंपटीशन में ऐसा सिलेबस नहीं होता है. कंपटीशन में जो आप चीज कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. जो आपको बेसिक्स पता है उस पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे भी चुके हैं वो लोग. ओके. अभी जब एग्जामिनर के पास क्वेश्चन खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा वो, थोड़ा सा और डिग करेगा डीप, धीरे धीरे डीप. ओके. So now I'm giving a question. Okay. So that question is homework. Okay. The time खत्म हो गया है. So a PN junction is given to you. Okay. A PN junction is given. Okay. Where your Na is given 10 raised to power 19 centimeter cube, ND equal to 10 raised to power 15 centimeter cube. Okay. Ni is given 1.5 into 10 raised to power 10, okay, centimeter cube. The ER is given as 11.9, and epsilon naught value you already know, that is 8.85 into 10 raised to power minus 14, okay, forward per centimeter, farad per centimeter. Okay. And the so you have to calculate what? You have to calculate with zero bias. In zero bias case, okay, first case zero bias, you calculate zero bias, calculate maximum electric field value. Second, you calculate depletion width. Okay. In zero bias case, first question है case 1 zero bias. Case second, same thing with same values, you have to calculate EM and W with applied voltage. Applied voltage is given as 0.3 forward bias.
0.3 volt. Okay, and case 3, you have to calculate when your VR is given VR, reverse voltage, reverse bias, VR is given 3 volts. Okay, so इन तीनों केस में आपको क्या निकालनी है, डिप्लेशन विड्थ निकालनी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओके, और मुझे प्लॉट करके दिखाना है ग्राफ में, जैसे मैंने ऐसे प्लॉट किया था ना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यस सर, ऐसे प्लॉट कर दिखाना है. सपोज ये जीरो बायस के लिए, फिर फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के लिए विड्थ कम हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर रिवर्स बायस के लिए विड्थ बढ़ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा. तो ये आपका जीरो बायस, ये फॉरवर्ड बायस, और ये फॉर रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो ऐसे प्लॉट करके दिखाना है और विड्थ निकालनी है. जीरो बायस में कितनी विड्थ है, फॉरवर्ड बायस में विड्थ कम होगी उसकी वैल्यू कितनी है, रिवर्स बायस में विड्थ बढ़ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी है. ऐसे ही जीरो बायस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कम हो जाएगा और रिवर्स में फिर बढ़ जाएगा. ओके, यस सर, तो ये आपको तीनों फॉर्मूले आपको दे रखे हैं सारे, यू नीड टू कैलकुलेट एंड शो मी. क्लियर है? ओके, यस सर, so I'm ending class here. Thank you, sir. Thank Thank you you, very sir. much. Thank you very much. Thank you, sir.